Okay. Need a confirmation. Screen is visible? Yes, no? Yes, sir. Great, thank you. All right. So we're going to continue from where we left off, but I would like to do a very quick revision of what we did last time. We started off dealing with multiple random variables. We said that you have a single sample space, and on that sample space, the way that we had defined a random variable is कि you take the outcomes, the random outcomes of the sample space and map each of those outcome onto real numbers. उनको real numbers के ऊपर map कर देते हैं. That defines one random variable. And the mapping is totally up to us. I can define a mapping of my liking. Okay. On the same sample space, I can define different types of mappings. So ये हो सकता है कि head को 7 कह दिया, tail को 25 कह दिया. ये भी हो सकता है कि head को 200 कह दिया, tail को 500 कह दिया. So multiple different mappings. So that means you can define multiple random variables, very many different variables on a single sample space, right? So when you do that, then you can try to answer probability questions which involve those multiple random variables. So single sample space can define multiple random variables. Okay, and once you do that, you can try to answer probability questions involving those multiple random variables. Okay. Now, while we can do that, without any formalism, not formalism, without any, procedures defined for multiple random variables, हम answer कर सकते हैं. But कुछ tools हमने develop किए, and those tools are, trying to define the what we call the joint distribution functions, joint PMF for discrete random variables, joint PDF for continuous random variable, and joint CDF for continuous as well as discrete random variables. And the definition is simply an extension of a single random variable. So for example, we said that the joint PMF of x and y taking values small x and small y would be equal to the probability that capital X takes a value small x and capital Y takes a value small y. This is the joint PMF of x and y. Okay. Similarly, the joint PDF of x and y was defined in a similar way that we had defined the PDF of a single random variable. We did not have a definition for the PDF, but we defined the PDF by using it in an expression.
recall करें for a single random variable we had defined the PDF of a single random variable x. हमने कैसे डिफाइन किया था? ऐसे डिफाइन किया था कि probability x takes belongs to the set B is given by the integral over the set B of some function. So हमने कहा था कि if there is a non-negative function fxx which satisfies this for all b, तो इसको हमने PDF का नाम दे दिया था. This is what we defined for the case of a single random variable. So multiple के केस में simple extension, multiple random variable के केस में it's a simple extension of that. And for the multiple random variable I define probability that xy, which is a ordered pair, two random variables taking two different values, two values belonging to some set C. जिस तरह ये एक आपके पास B था, एक सेट था जिसके ऊपर आपने इंटीग्रेट किया था. Now you have the set C, and the set C is a pair of real numbers. B was the set of real numbers. C is the set of pairs of real numbers. ठीक है. So बिल्कुल उसी तरह से डिफाइन करेंगे. This would be equal to integral, and this would be a double integral that xy belongs to C. Exactly उसी तरह जैसे हमने ये कहा था कि x belongs to B, उसको हम खाली B भी लिख देते हैं. In short, जो ये x belongs to ये वाली जो चीज है, ये इसको हम लिखें ना लिखें, it doesn't matter, implicit ही है. So now we define this joint PDF of x and y as dx dy, if there is a non-negative function fxy which satisfies this equation, probability that your x and y belongs to a set C, where C is a set of pairs of numbers. If the integral over that set C of this sum function, double integral, is equal to that probability for all C, so then we say okay, this is your joint PDF. ये define ही हमने इसको ऐसे किया, इसको joint PDF हम कहते हैं. Okay. So now what we also did is हमने ये भी कहा कि we can also say कि C is pairs x and y such that x belong to A and y belong to B. ऐसे भी कर सकते हैं कि C जो है वो उसके अंदर pairs आ रहे हैं जिसमें से हर x belongs to A, y belongs to B. Okay, so that means कि A और B जो है वो बिल्कुल उसी तरह से pair of इस तरह से set of real numbers हैं बिल्कुल जिस तरह से ये B था. Okay, so the probability that x belongs to A and y belongs to B, x is in set A, y is in set B, is equal to integral over B integral over A fxy xy dx dy. By the way, ये मैंने A अंदर लिखा है तो ये dx अंदर होगा और B बाहर है तो ये dy बाहर होगा. If we interchange the order, that's also okay. कोई इशू नहीं है उसमें, वैसे भी लिख सकते हैं. So an example of this would be the probability that your random variable x is between small a and small b, which are two fixed numbers. Small a and small b, two fixed numbers, not the regions. यहाँ पे a और b ये regions थे. So and y is between these two fixed numbers c and d. This would be equal to y going from c to d, x going from a to b, f xy xy dx dy. Many different ways of writing this. We had also established that since fxy ये जो आपके पास function है, this is non-negative and integrates to 1.
integrates to 1 in exactly the same way कि जैसे joint PMF जिसकी हमने एक extensive example की थी balls की और red and white and black balls की, जिस तरह PMF जो है वो sums up to 1, so इसी तरह fxy the density function, the joint density function of x and y it integrates to 1. What we had also defined is the अगर हम fxy इसमें से हम इंटीग्रेट आउट कर दें y going from minus infinity to plus infinity dy, if I integrate out y, this will equal to fx of x. So y is integrated out. y को इंटीग्रेट आउट कर दें तो आपके पास x का डेंसिटी फंक्शन बच जाएगा इन एग्जैक्टली द सेम वे जिस तरह से हमने डिस्क्रीट के केस में किया था कि वो आप एक टेबल हमने बनाया था उसमें एक रो को ऐड कर देंगे तो आपके पास x का pmf आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर देंगे y को तो आपके पास x का pdf आ जाएगा. सो दिस fxx is the pdf of x, और ये चूंकि ये जॉइंट से निकला है इसको समटाइम्स we regarded it as marginal pdf. मार्जिनल पीडीएफ कोई स्पेशल चीज नहीं है, ये बस पीडीएफ ऑफ एक्स ही है, ये पीडीएफ ऑफ एक्स ही है. ओके, नाउ वन एग्जांपल, ये भी हमने शायद लास्ट टाइम की थी. सो लेट्स से कि यू हैव एफ एक्स वाई जॉइंट पीडीएफ अवेलेबल, ये आपको दिया हुआ है, this is available to you, ठीक है, and we need the probability x is less than 2 is less than 3. Now if you focus on this is a probability question which does not involve y, it only involves x. If I have the pdf of x, I can always answer that. chapter 5 मैं तो इसको आंसर कर सकता हूं, right? So y की हमें जरूरत ही नहीं है, बस हमें x का pdf होना चाहिए, but I don't have access to the x pdf. So how do I get the x pdf? x का pdf I can easily find that out by integrating out y out of this joint pdf. इसमें से इंटीग्रेट आउट कर देंगे तो आपके पास x का मार्जिनल pdf आ जाएगा या सिंपली pdf आ जाएगा. Okay, so if you recall that probability that your random variable x falls between 2 and 3. By the way, since x is a continuous random variable, if I put less than equal to or less than equal to, it means exactly the same thing. ये डालें या ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. And the reason for that is कि continuous random variable taking a specific value, the probability of that event is always 0. So this would be equal to if I somehow find out कि मेरे पास x का डेंसिटी फंक्शन क्या है, वो इंटीग्रेट आउट y करने से, तो ये this would be 2 to 3 fx dx. How do I find this guy? Find this guy by integrating out y. y को इंटीग्रेट आउट कर देना है आपने. Okay, in fact small y. Another way of looking the same thing, and the reason that we are reiterating it is just to make sure that we understand कि ये joint PDF में हो क्या रहा है. So another way of looking at the same thing is, another view of the same problem is कि probability x is between 2 and 3 is the same thing as saying कि probability that x is between 2 and 3 and y can be anything, which means कि y is between minus infinity and plus infinity. And by the way, if you look at this event, ये वाला जो event है आपके पास, this is a certain event with probability 1, और ये एक ऐसा इवेंट है, probability 1 वाला इवेंट है. इसके साथ अगर मैं ये एंड अगर कर दूं या इंटरसेक्शन अगर ले लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता. This is a event occurs with probability 1.
Y will always be between minus infinity and plus infinity because it's a random variable. Minus infinity से छोटा नहीं हो सकता, plus infinity से बड़ा नहीं हो सकता. Now, if you notice this expression, this is a probability question which involves x and y both. And for this, I can make use of the joint PDF. अब मुझे अलग से marginal PDF निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है? So क्या होगा कि मैं कह सकता हूं कि x going from 2 to 3 and y going from minus infinity to plus infinity, f xy dy dx. Okay, तो ये आएगा. But if you notice कि ये वाली जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये जो रेड सर्कल के अंदर आई है, what is this? This is the marginal PDF. This is your fx of x. ये वही चीज है. So really it doesn't matter. चाहे आप इसको इस नजर से देख लें, चाहे आप इसको इस नजर से देख लें, both are equivalent. एक ही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? Now, what is very, very important, is whenever you are dealing with x and y jointly continuous, x and y jointly continuous, okay, very, very important to identify the region of integration, ठीक है? ये हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल भी की थी और उसमें हमने रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को आइडेंटिफाई किया था. What do we mean by that? What we mean by that is कि सिंगल रैंडम वेरिएबल के केस को अगर देखें, सिंगल रैंडम वेरिएबल, तो इफ यू रिकॉल उसका पीडीएफ इस तरह का होता था. उसका पीडीएफ ऐसा होता था कि अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस यू विल हैव स्मॉल x, और ये कोई इस तरह का पीडीएफ बनेगा. यू नो, दिस इज योर fx ऑफ x. ये सिंगल रैंडम वेरिएबल के केस में था, ठीक है? यहाँ पे इफ आई आस्क यू अ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन अबाउट x, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x इज बिटवीन स्मॉल a एंड स्मॉल b, सो दिस वुड बी दिस एरिया. The probability that x is between a and b. What about the two-dimensional case where you have multiple random variables? और in fact 3 का तो अभी हम जिक्र ही नहीं करते अभी, तो let's just take a look at the multiple, actually 2 random variables. You can have more than 2 random variables as well, but visualizing that would be very, very challenging. Okay? So now what you have is not just one random variable but 2 random variables. ठीक है? So यहाँ पे density function is shown as the along the y-axis. ये y-axis पे आपको density function show किया गया है. Okay? Vertical axis पे ये show किया गया. Now for 2 random variables, I have x-axis here and y-axis here, or vice versa. एक x है और एक y है. ठीक है? Now the density function is somewhere coming out of the paper. So it would be, you know, something like this. You know? कुछ इस तरह का होगा. Okay? I don't have a you know, maybe I have a good picture here. Let me just find out if I have a picture here. I will. Yeah. So I am going to put this. I'm going to put this here. Okay. And so here is the two-dimensional PDF. Let me just show you what this means. Huh? So you have x along this axis
x along this axis and y along this axis. Okay, and the PDF, the joint PDF is shown here coming out of the paper, That makes sense, right? So now using this, I can answer all probability questions about x and y, which involve x and y. Okay, so for example, if I want to answer this question, what is the probability x is between 0 and 5? X is between 0 and 5, and y is between, let's say, 5 and 10. Y is between 5 and 10. Okay. So let's try to identify that here. So x between 0 and 5, here x is 0, here x is 5. Okay. And y is 5 and 10, y between 5 and 10. So what we are talking about here is कि y जो है वो 5 है along this line, and y is 10 along this line. Okay. And then we have x is 0 along this line and x is 5 along this line. Okay? So I am talking about a region where x is between 0 and 5 and y is between 5 and 10, which means that I'm really talking about this region. So I'm going to use this color here. ये वाला जो रीजन है, इस रीजन की बात हो रही है, इसको मैंने शेड कर दिया. सो इस शेडेड रीजन के ऊपर जो भी डेंसिटी फंक्शन है उसको आपने 2 डायमेंशंस के अंदर इंटीग्रेट करना है. सो दिस वुड बी इंटीग्रल x going from 0 to 5 and y going from 5 to 10. Okay, fxy, which is shown here, xy dy dx. Excuse me, sir. Yes. You're saying that it's coming out of the page because it's projected upwards? GG. That's Acha. correct. Okay. Into the page hota to it would be projected downwards? Projected down into the page और जो है वो negative में चला जाता. So we will never have a joint PDF which is negative. So it will always be positive. ये देखें आप इसमें अगर देखें, so ये जो 3 dimensions आपको नजर आ रही हैं इस picture के अंदर, this picture is showing you 3 dimensions. X is along this axis, Y is along this axis. इसको जरा इस तरह से show किया गया है, and the vertical axis here is vertical axis, जिसको आप यूं समझ लें कि ये view this as coming out of the page. ठीक है. So inside the page जो अगर होगा तो वो तो negative में चला जाएगा. So we will never have the joint density function or the density function, probability density function negative ever. ठीक है. Yes. ठीक है. Thank you. Okay, great. Okay. So yeah, important to realize कि ये जब दो random variables involved हैं तो कैसा हो रहा है. 3 के केस में जो है वो it would be hypergeometric kind of a figure. उसको शायद हम विजुअलाइज भी नहीं कर सकेंगे, पेपर पे ड्रॉ भी नहीं कर सकेंगे. 2 वेरिएबल्स के केस में तो हमने ड्रॉ करके देख लिया, राइट? ओके, नाउ about the same figure, this is showing you the joint PDF. Okay, I know that from the joint PDF I can always find the marginal PDF. अगर मुझे कोई कहे कि इसमें से x का PDF निकालो तो मैं निकाल दूंगा, अगर कोई कहे कि y का PDF निकालो तो भी मैं निकाल दूंगा. Okay, now let's say that you are asked a question about x only, 0 less than x less than 5. Okay. Yeah, इसको अगर if you don't want to write this less than equal to, both of these are the same things क्योंकि continuous है. Okay, so we know that this is equal to x going from 0 to 5 fxx dx. ये तो ये होना चाहिए. But for this I need this PDF of x, marginal density functions of x. And how do I get that? I get this by integrating out y from this guy. Okay, और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि you will have 0 to 5, okay, and y going from minus infinity to plus infinity. Okay, fxy xy dy dx, and this guy here is the marginal of x, marginal PDF of x.
ओके, फिगर में ये कहां पर है, लेट्स से फिगर के अंदर भी देख लेते हैं. सो फिगर के अंदर लेट्स यूज दिस कलर. ओके, सो फिगर के अंदर आई एम इंटरेस्टेड इन x between 0 and 5, x between 0 and 5. So here is x is equal to 0 and here is x is equal to 5, and I don't care about y. I don't care about y. Y can be anything, anywhere. Can be anything from minus infinity to plus infinity. Could be anything from minus infinity to plus infinity. So that means I am talking about integrating over this region. ये यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक, इस पूरे रीजन के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस पूरे रीजन के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हैं. ओके, एंड इंटीग्रेट किस चीज को कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं जो भी वर्टिकल उसके ऊपर आपको जॉइंट डेंसिटी फंक्शन नजर आ रहा है, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. So there is a question, Chayan. I don't generally read the chat messages unless I am asking something. So it is better कि आप जो है वो माइक को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछ लें. So I just happen to look at this question. The question is कि does it matter if we integrate x first and y later? It does not matter in this case. As far as you are talking about the fixed numbers here. But we did a question last time. And if I can go back to that question, I think should be somewhere here. ये हमने क्वेश्चन किया था. हाँ, ये वाला हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने कहा था कि जॉइंट डेंसिटी फंक्शन आपको दिया हुआ है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन y, एंड वी सेड के द रीजन वेयर x इज लेस देन y इज दिस रीजन. ये दिस इज द रीजन वेयर x इज लेस देन y. ये इन्फिनिटी तक जा रहा है. ठीक है, तो हमने कहा कि इस रीजन को कैसे रिप्रेजेंट करें. इस रीजन को दो तरीके से रिप्रेजेंट करने के, एंड बोथ वेज विल गिव यू द सेम आंसर. एक तो तरीका ये है कि आप इसमें ये कहें कि ये x गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, x गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, बट y गोइंग फ्रॉम x टू इंफिनिटी, सो दैट will ensure that y is never less than x. Y is x goes from y to infinity. So ये एक तरीका है इस रीजन को डेजिग्नेट करने का. Equivalently, the other way is to say कि y goes from 0 to infinity. Y goes from 0 to infinity and x goes from 0 to y, as indicated by those green lines here. ये green lines जो यहाँ पे बनी हुई हैं, ये x going from 0 to y, because this line is really x is equal to y wali line. So x going from 0 to y and y going from 0 to infinity. Very important to get the limits right. Now, in this case, if I have to set up the integral, ये हमने integral ऐसे set up किया था. Now, in this case, it is important if we can have x first or y first. Okay, why? So यहाँ पे देखें, what we have done is कि हमने x को अंदर रखा है, x because x is going from 0 to y. So ये वाला method हमने use किया है, and y is going from 0 to infinity. In this case, if I interchange the integrals, my end answer will be in terms of y, which is not right. Because we are interested in a probability. वो in terms of y तो नहीं हो सकती, हमने कहीं जिक्र ही नहीं किया y के बारे में. Okay? So small y में हमारा आंसर तो यहाँ नहीं हो सकता. So we just need to make sure कि ये रीजन की जो definition है, description है, it is very clear to us. कुछ examples अभी हम और करेंगे, आज भी करेंगे. So we will get more clarity on that. Okay. So the question is what is the relation between CDF and PDF relationship? We know that कि single variable के केस में CDF को differentiate करें तो PDF आ जाता है, PDF को integrate करें तो CDF आ जाता है. Okay? And same is true for the joint case. We know that कि fxy, capital Xy, AB, this is the joint CDF, is the probability x less than equal to a, y less than equal to b. So this is equal to integral minus infinity to a minus infinity to b fxy xy
dy dx, dy dx. So इसको आपको एक बार नहीं, आपको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. So you'll have to do a partial differentiation here. So if you do that, so देख लें इस साइड पे दो दफा डिफरेंशिएट करें तो you will end up getting this guy. So fxy AB would be equal to double differentiation with respect to A and then with respect to B, fxy AB. Yeah. एक एग्जांपल इसकी और करते हैं, not for this but जिसमें हमें regions की clarity होगी. So another example. The example is we are given the joint PDF of x and y, joint PDF of x and y, which is given by e to the minus x plus y, and x is between 0 and infinity, and y is also between 0 and infinity. Y is also between 0 and infinity. So we need the PDF of x divided by y, x divided by y. Okay. So note that x is a random variable, y is a random variable. So it's a function of two random variables. इसको हम कहते हैं कि ये w है. ठीक है? Let's say it's called w. So w is a random variable. W is a random variable. Okay. So let's try to find the CDF of w. ये हमारा बड़ा स्टैंडर्ड सा तरीका है. Okay. CDF फाइंड करते हैं, CDF आ गया तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, PDF आ जाएगा. Okay. So CDF of w would be fw evaluated at A is probability w is less than equal to A. That's the definition of the CDF, right? So this would be equal to the probability w is x over y, which is less than equal to A. This is equal to the probability x is less than equal to ay, right? X is less than equal to ay. So now x is between 0 and infinity and y is between 0 and infinity. So that means it's a region like this. It's a region like this. ये आपका x है, ये y है. पहला जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट के अंदर, इस क्वाड्रेंट के अंदर, इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन इज नॉन जीरो. बाकी इस जगह पे भी जीरो है, इस जगह पे, इसके बाहर जीरो है. तो ये तो हमें इसको तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है. आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि where is x is less than equal to ay. So that means I would like to integrate it, in fact double integrate it, because I'm integrating over this region, integrate it over all xy such that x is less than ay. X is less than ay. So let's take a look. X is less than ay. So everyone knows कि ये मैं एक यूनिट स्लोप की लाइन अगर यहाँ पे डाल दूं, ये इस तरह की स्लोप हो, so this is x is equal to y. अगर इस तरह की स्लोप हो तो this would be equal to x is equal to 2y, or something like that. So this would be equal to x is equal to 0.5y or something like that. So that means कि x is equal to ay जो है वो इसी तरह की एक स्ट्रेट लाइन है. X is equal to ay इसी तरह की एक स्ट्रेट लाइन है. So let me just draw that and see. Okay, let's say this is x is equal to ay. Let's say this line is x is equal to ay. I am interested in x less than ay, which means कि I am interested in this region. I am interested in this region. ये जो green color किया मैंने. Okay, so in this region I have to integrate fxy xy d x dy. इसको integrate out करना. Okay? So that means once again there are two ways of writing this region. So I will use y going from 0 to infinity and x going from 0 to ay. X going from 0 to ay. ये जो हमने green horizontal lines लगाई हैं, x is 0 here and x is equal to ay here. X is 0 here and x is equal to ay here. ठीक है? So ये 0 से ay तक मैंने integrate कर दिया इस line के along. But this is for a fixed y. So I have to take
y from 0 to infinity, y को हम 0 से infinity तक ले जाते हैं. So this would be equal to e to the minus x plus y dx dy, dx dy. Now this would be equal to y going from 0 to infinity. अच्छा, ये अंदर वाला जो इंटेग्रल है, ये x वाला इंटेग्रल है, उसमें y जो है वो हमें ऐसे ही परेशान कर रहा है, उसको बाहर निकाल देते हैं. e to the minus y बाहर निकाल देते हैं. So x going from 0 to a y e to the minus x dx. Okay? और एक dy आपका यहाँ पड़ा हुआ है. I would like somebody in the chat window tell me कि ये क्या चीज आपको शो कर रहा है, ये क्या चीज आपको शो कर रहा है. So think about it. आपने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है, राइट? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, उससे कोई रिलेशनशिप है इसका? व्हाट इज दिस गाय? व्हाट इज दिस गाय? आंसर्स इन द चैट विंडो प्लीज. दिस इज CDF of x. दैट इज ट्रू, दिस इज CDF of x. लेकिन x, ये भी देखें कि ये साथ में एक आपको एक अंदर एक इंटेग्रल जो दिया हुआ है, दिस इज सिमिलर टू लैम्डा e to the minus lambda x, right, with the lambda of 1, with the lambda of 1. Okay, so we already know the answer to this. We already know the answer to this. Why? Because we remember the CDF of an exponential random variable. हमें पता है कि ये 0 से a तक जब आपने इंटीग्रेट इसको करना होता है, in fact I shouldn't use a here, कंफ्यूज न करे, 0 से इसको b तक इंटीग्रेट कर देते हैं. So this is CDF of an exponential and this is exactly the same shape as this. उसी तरह की चीज है ये, सिर्फ लैम्डा जो है वो 1 है और b की जगह पे ay लिखा हुआ है. So इसका आंसर क्या होता था? इसका आंसर हमारे पास होता था 1 minus e to the power minus lambda b. ये हमें आंसर पहले ही पता था. ठीक है? So I can always do this integration. It's not a difficult integration anyway. ये बहुत आसान सी इंटीग्रेशन है. ठीक है? But sometimes you can be even quicker. It's e power minus y and this would be equal to 1 minus e to the minus 1 minus e to the minus ay and dy. ठीक है? चलिए अब आपको एक और ट्रिक भी दिखाते हैं. And that trick is कि इस इंटेग्रल को मैं अलग कर सकता हूं. y going from 0 to infinity, it would be e to the minus y dy minus integral y going from 0 to infinity e to the minus a plus 1 y dy. A is a constant, remember. Now, first integral answer of this, first integral answer of this, answers in the chat window. First integral answer of this. What is this guy? This is an exponential distribution integrated from 0 to infinity with lambda 1. So this is really the integral over the entire region of the PDF, of a PDF which is exponential with lambda is equal to 1. So इसका आंसर हमें डायरेक्टली पता है कि 1 है. ठीक है? माइनस दूसरे का क्या आंसर होगा? दूसरे इंटेग्रल का क्या आंसर होगा? Again, this looks exponential to me. A plus 1 is a constant. So all I need, मुझे पता है कि lambda e to the minus lambda x dx integral 0 to infinity, ये हमेशा 1 होता है. ये हमेशा 1 होता है. Knowing this, इसको देख के मैंने फौरन से ये लिख दिया था. इसको देख के मैंने फौरन से ये लिख दिया था कि ये 1 होना चाहिए. ठीक है? लेकिन इसको यूज करके मैं इसका भी तो आंसर लिख सकता हूं. इसका आंसर होगा, हाँ, अगर एक a plus 1 हमारे एक लैम्डा यहाँ पे मिसिंग है. So I see a lambda here. I see a lambda here. This lambda is here. उसके साथ ये एक लैम्डा होना चाहिए. यहाँ पे a plus 1 तो है लेकिन यहाँ पे मिसिंग है. मिसिंग है तो कोई बात नहीं, हम उसमें डाल देते हैं a plus 1 और फिर वो जो बाकी बच जाएगा उसका आंसर भी 1 हो जाएगा. So this is your CDF. This is your CDF. How do you find the PDF? PDF कैसे निकालेंगे? PDF ऐसे निकालेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे. This is
f of W of A. So small f of W of A would be equal to the derivative of this, which would be 1 over A plus 1 whole square. Okay. And you have to specify that A goes from 0 to infinity. Okay. So this example also showed you कि किस तरह से एक रीजन के ऊपर इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रल्स की लिमिट्स कैसे डिफाइन करते हैं. Now I am going to talk about a topic which is covered a little bit later in the book. इसी चैप्टर के अंदर थोड़ा सा बाद में कवर किया हुआ है, लेकिन I think it's useful to introduce it early on. आपने ये पहले ही देखा हुआ है. Okay, so this would be distribution of x given y equal to y. और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन. ये हमने लास्ट टाइम इनफैक्ट इसका एक प्रॉब्लम के अंदर सॉल्व भी कर दिया था. हमने कहा था बाद में इसकी डिटेल बताएंगे. बट डिस्क्रीट केस के लिए, फॉर द डिस्क्रीट केस it is quite simple, and also simple for the continuous case as well. What is, we define the conditional distribution of x given y. See, this is the distribution of x. ये x की distribution है conditioned on some y. तो ये इसमें अगर sum up करना है, कोई आंसर निकालना है, मुझे x का आंसर मिलेगा. इसमें मुझे y का आंसर नहीं मिलने वाला, इसमें मुझे x का आंसर मिलेगा, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के आंसर्स मिलेंगे. ठीक है. This is equal to the probability that x takes a value x given y takes a value y. This is the definition of conditional probability, conditional PMF. This is called the conditional PMF of x given y is equal to y. ये definition है इसकी. Okay? लेकिन if you think about it, कि ये जो हमारे पास x is equal to x is an event, y is equal to y is an event. So this is probability of one event given another event. And what is that? That would be pxy x given y. This would be equal to probability of a given b. Probability of a given b is always probability of a and b divided by probability of b. This is a simple conditional probability formula. So this would be equal to, if you look at it, ये जो numerator में है, the guy in the numerator is the joint PMF of x and y, okay, divided by the marginal PMF of y. So conditional PMF of x given y is equal to the ratio of the joint. This is joint and this is your marginal. Y का marginal है, not x का marginal. Okay. So this is all good. ठीक है. Continuous case में क्या होता है? Continuous के केस में थोड़ा सा इशू आ जाता है. इशू क्या आता है? इशू ये आता है कि यहां पर तो हमने लिख दिया प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y. ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास. बट इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू y, दैट्स ए जीरो. वो तो ब्लो अप हो जाएगा. सो ये जीरो आपके पास निकल आएगा. सो it's non-trivial to apply this conditional probability formula in the case of continuous random variables. Instead, हम क्या करते हैं? हम consider ये करते हैं, ठीक है, conditional probability define करने के लिए, to define conditional, अब PMF नहीं होगा, PDF of x given y equal to y, which is a zero probability event, by the way, in the case of continuous case. We consider the following, and this would be that your random variable capital X
is between x and x plus dx. ये एक छोटे से रीजन में है जो x और dx में, given that your other random variable y is in a small region around y plus dy. So this is the conditional probability that x falls in this small region dx near x, given that y falls in this small region dy near y. Okay. Now I can write this as probability. यहाँ पे आप conditional probability का formula लग सकता है, यहाँ पे जरूर सकता है. क्यों? क्योंकि this is x less than equal to x plus dx and बिल्कुल a given b वाला फॉर्मूला लगाया आपने, and small y is less than equal to y plus dy, okay, divided by probability y is y plus dy. Now dx and dy are very very small regions, very small regions. In those regions there is no significant change in the density functions. Dx and dy are very small, and so is dy. ये दोनों बहुत small है, ठीक है. So if you look at the numerator, बिल्कुल जैसा हमने यहाँ किया था कि यहाँ numerator में हमें ऐसे लगा था कि ये तो joint है, यहाँ पर भी this is the joint density function. This is the joint density function, but it is approximately equal to fxy xy joint density function with dx and dy, ताकि आपके पास probability बने, divided by fy of y into dy. Okay, so this turns out to be fxy xy divided by fy of y into dx. Okay, and this guy here, this guy in the expression here, we call this the conditional PDF of x given y is equal to y, and this is written as f of x given y into dx. So this is the probability that your x falls in a small region dx near x. This is given by this conditional density function. Therefore, fxy xy is given by this and so बिल्कुल जैसे हमारे पास था कि the conditional PMF was joint divided by marginal, बिल्कुल उसी तरह से conditional PDF is divided joint divided by marginal. So definition के अंदर कोई discrepancy नहीं है. The only reason that we had to go through this procedure is because probabilities in the case of continuous random variable, point probabilities are always zero. So therefore, I can write that probability x belongs to A given y is equal to y. Continuous के केस में अगर इसको आप सॉल्व करना शुरू करें ना, तो डिनोमिनेटर में आपके पास probability y is equal to y आएगी, which is a zero. So हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है. But I can make use of this conditional distribution of x given y is equal to y to find out that this is integrated over A fxy xy dx. So very important formula here. Okay, realize that given y is equal to y, this is a zero probability event. लेकिन मैं उसके ऊपर भी कंडीशन कर सकता हूं, and I will get a finite answer. सर एक चीज पूछनी थी. जी. तो ये 2-3 स्टेप्स ऊपर वाली एक चीज समझ नहीं आई थी. कौन सी जी? ये जो सेकंड से थर्ड वाले में जिस तरह आए हैं, यहां से यहां. हाँ जी.
ठीक है. सो लुक एट इट कि यहाँ पर जो है ना, ये वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी कि योर एक्स इज इन दिस रीजन एंड वाई इज इन दिस रीजन. सो दैट मीन्स वी आर रियली टॉकिंग अबाउट कि ये आपका x है, ये आपका y है. So I am talking about this small region जिसके अंदर probability density function जो है वो constant होगा. So मुझे ये probability कैसे निकालनी होती है? ये probability ऐसे निकालनी होती है कि I integrate over x and integrate over y, जो भी उसका region होता है. किसको इंटीग्रेट करते हैं? f x y dx dy. ठीक है. लेकिन इफ यू लुक एट इट कि यहां पर जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो आपके पास सिर्फ dx है और वो dy है. सो ये x, इनफैक्ट लेट मी जस्ट, इसको जो है वो ये x से x प्लस dx है और ये y से y प्लस dy है. सो बट द क्लेम इज कि ये f x y इस इतने छोटे रीजन के अंदर, दिस रीजन इज वेरी 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 स्मॉल बिकॉज dx एंड dy आर वेरी स्मॉल, इसीलिए हमने कहा था ये बहुत स्मॉल है. तो मैं इस fxy को जो है मैं यहाँ इंटेग्रल से बाहर खींच के लेके आ सकता हूँ. इसको जब इंटेग्रल से बाहर आप खींचेंगे तो ये आपके पास आ गया, और बाकी आपके पास क्या इंटेग्रल में बचेगा? इंटेग्रल के अंदर आपके पास x से x प्लस dx और y से y प्लस dy dx dy वो आपके पास बचेगा. उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास dx आ जाएगा और dy. राइट? मेक सेंस? जी सर, समझ आ गई. ठीक है. ओके. नाउ सो नाउ आई एम गोइंग टू सर आई हैव अ क्वेश्चन. जी जी जी. जो आखिरी स्टेप की है उसमें you had the denominator as f of capital Y at small y. ठीक है, लेकिन जो नीचे आपने क्वेश्चन किए it became f of capital X with small x at small x. तो ये मार्जिनल बदल क्यों गया है? और am I missing something? You are not missing anything. ये मेक सेंस? ठीक हो गया? Yes. नहीं बदलना चाहिए था. ऊपर से नीचे आते आते तो नहीं बदलना चाहिए यार. सही है. माय बैड. बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे कंडीशनल पीएमएफ ऑफ एक्स गिवन वाई इज द जॉइंट डिवाइडेड बाय मार्जिनल ऑफ वाई. बिल्कुल उसी तरह से है ये भी कि कंडीशनल पीडीएफ ऑफ एक्स गिवन वाई इज जॉइंट डिवाइडेड बाय मार्जिनल ऑफ वाई, नॉट एक्स. गलती से लिख दिया. ओके. सो लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन शुरू किया था. हमने कहा था कि एक कंसीडर करते हैं एक सर्कुलर रीजन कंसीडर करते हैं इस तरह का. ठीक है. और सर्कुलर रीजन में यू हैव सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस कैपिटल आर. इसके अंदर हम यूनिफॉर्मली कहीं पे भी एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं. लेट्स से दिस पॉइंट इज कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, उसकी कोऑर्डिनेट्स हैं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एंड यू हैव स्मॉल एक्स स्मॉल वाई हियर. ठीक है. जो आपका रैंडम पॉइंट है वो यहाँ है, और द क्लेम इज के वी कैन सिलेक्ट इट यूनिफॉर्मली. every point in this circle is equally likely to be picked. बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा है जैसे हमने वन डायमेंशन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का कहा था ना कि इफ समथिंग इज यूनिफॉर्म बिटवीन 3 and 5 देन एवरी पॉइंट बिटवीन 3 and 5 कैन बी इक्वली लाइकली टू बी पिक्ड. तो उसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थी. यहां पर इसकी जो है ना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है. ये सर्कल आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं शो कर रहा है, ये नहीं शो कर रहा है. उसको शो करने के लिए मुझे थर्ड डायमेंशन ड्रॉ करनी पड़ेगी. इफ आई कैन probably try to do it. ये और ये इस तरह की होगी. ठीक है. and there is some constant height here c. ठीक है. so this is x and this is y, और वो coming out of the paper is this uniform distribution. so the ये example है यहाँ पे f(xy) is equal to c if
x square plus y square is less than equal to r square, and zero otherwise, and zero otherwise. इसका मतलब है कि ये जो डेंसिटी फंक्शन है आउटसाइड दिस सर्कुलर रीजन, जिसको यहाँ 3 डायमेंशन में दिखाया गया है, outside this circular region the density function is zero. It's only non-zero within this circular region, and it is uniform in this circular region. Constant height का है ये, c height का यहाँ पे आपको एक इस तरह की डिस्क सी मिलेगी. ओके, सो सबसे पहले तो c फाइंड करते हैं, सबसे पहले तो c फाइंड करते हैं. ठीक है, how do you find c? In order to find c, I know okay, integral over the entire region x square plus y square less than r square f x y dx dy, this should be equal to 1. Why? Because this is the PDF, this is joint PDF, so the integral over the entire region must be equal to 1, must be equal to 1. Okay, which means कि c times integral x square plus y square less than equal to r square dx dy should be equal to 1. And what is this guy here? This guy here is, ये या तो रेक्टेंगुलर से पोलर में इसकी कन्वर्जन करें और फिर उसके बाद जो इंटीग्रेट कर दें, या सिंपली रियलाइज कि what we are talking about here is the area of this circular region. एक सर्कुलर रीजन के एरिया की बात हो रही है. So this would be equal to pi r square is equal to 1, which means that c would be equal to 1 over pi r square. Okay. Now, part B is they are asking, okay, what is fxx and fyy? Now, we realize कि जो x का होगा y का भी उसी तरह का होगा, by symmetry. There is nothing special about x or y. तो हम एक का निकाल लेते हैं, दूसरे का जो है वो ऑटोमेटिकली x की जगह पे y रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. So how do I find fxx? How do I find fxx? There is a standard way. We know the joint distribution. The joint PDF of x and y is given to us. I just integrate out y. I just integrate out y, and I will get the marginal of x. The marginal of x. y को हमने अगर इंटीग्रेट आउट कर दिया तो x का मार्जिनल आ जाएगा आपके पास. And this would be equal to, we now know that fxy is equal to 1 over pi r square. 1 over pi r square. उसको इंटीग्रल से बाहर खींच लेते हैं, and then integrate realize कि fxy is equal to 1 over pi r square only in this circular region. इसके बाहर नहीं है, इसके बाहर नहीं है. So that means कि when I substitute 1 over pi r square, when I substitute 1 over pi r square instead of fxy, I just need to make sure कि यहाँ पे मेरे पास लिमिट्स जो है वो सही होनी चाहिए. और वो लिमिट्स क्या होंगी? वो लिमिट्स वो होंगी कि whenever the joint PDF is equal to 1 over pi r square, and that is the area whenever x square plus y square is less than equal to r square, or y square is less than equal to r square minus x square, or y is less than equal to square root of r square minus x square, magnitude of y. Okay, which means okay, y is now going from minus square root of r square minus x square, say plus square root of r square minus x square dy. Okay, and this is very easy to integrate and substitute, so this would be equal to 2 over pi r square integral square root r square minus x square. और लास्ट टाइम हमने पूछा था कि is this uniform? Is fxx uniform? And the simple answer is कि no. इसके अंदर ये देखें इतना सारा x आ रहा है, इसको प्लॉट करके देख लें, x can go from minus r to plus r. इसको प्लॉट करके देख लें minus r से plus r तक, तो ये x है, and you have fxx, which is the plot of this guy here, and if you plot it, this will turn out to be like this, minus r se plus r. No uniform. It's not uniform.
this would be equal to 2 over pi r. You can verify it. जब x 0 है आपके पास, so this would be r square का square root and then 2 over pi r. So fxx is not uniform. No. इसी तरह f by y भी लिख सकते हैं. f by y would be equal to, by symmetry would be equal to 2 over pi r square minus y square, r square minus y square. ठीक है. Once again, इसमें भी minus r less than equal to y plus r. ये इसकी रेंज है. y की भी यही रेंज है. y ना इस माइनस r से छोटा हो सकता है, ना प्लस r से बड़ा हो सकता है. It's everything between minus r and plus r. C part. So सबसे पहले हमने क्या किया? हमने सबसे पहले C फाइंड किया पार्ट A में. दूसरे पार्ट में हमने मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ x फाइंड किया. तीसरे पार्ट के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं fx given y. x given y. Let's try to find it out. This would be equal to the joint density function of x and y divided by the marginal of y, which would be equal to fxy. ये हमें पता है ये क्या चीज है. ये है 1 over pi r square divided by fy of y. This is 2 over pi r square minus y square. ठीक है. Which is equal to 1 over 2 r square minus y square. This is the conditional PDF of x given y is equal to y. Okay. And in this case, x is between r and y is also between r and r. Now my question again, is this uniform? Yes or no? Answers in the chat window. देखते हैं कितने लोग yes वाले हैं, कितने no वाले हैं. No. 3 no वाले वोट आ गए. Others? Is this uniform? So let me just give you a reminder of what we had said about the conditional density function of x. This conditional density function of x will answer probability questions about x, because this is the density function of x. Okay, it is conditional, but it is the conditional density function of x, not of y. It's not going to answer any question about y. It is going to answer questions about x. So what this guy is going to answer is, if you have this circle, and if you fix a y, ये मैंने y को यहाँ पे फिक्स कर दिया. ठीक है. If you fix a y, ठीक है, इसका मतलब है कि अब आप इस horizontal line से नहीं हिल सकते. That means कि you are here, you are somewhere here. ये जो dotted line लगा दी है, बस आप इसी पे कहीं. So you cannot move from this line. This is y is equal to y. एक fixed value हमने डाल दी. Okay. Given this value, yes. Can you please talk about why this is only dependent on y? मतलब कि यहाँ पे इस equation में why don't we have any x reliance? हाँ. So this is how it turns out to be. इसके अंदर कोई x की reliance नहीं है. ये सिर्फ y पे dependent है. What that means is, coincidence या हर केस में हमारे पास ऐसे ही होगा? This is a coincidence. And this is the reason this guy is not dependent upon x. If you recall कि आपके पास fx of x, अगर आपके पास uniform
A to B होता था, यूनिफॉर्म A to B होता था, तो आपके पास 1/B - A ऐसा होता, राइट? यही होता था ना। ये मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं कि एक सिंगल रैंडम वेरिएबल जो यूनिफॉर्म है A से B तक, तो उसका डेंसिटी फंक्शन जो होता था f(x) वो 1/B - A होता था, कोई x की डिपेंडेंस नहीं होती, ठीक है। x चाहे जो भी वैल्यू ले ले, इट विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल रिमेन कांस्टेंट, and that is the reason that this guy here is uniform, you might have been tricked, to see कि ये तो इसके अंदर y आ रहा है, y चेंज होगा तो ये आंसर आपका चेंज हो जाएगा। That's true, but think about it कि for a given y I am along this green line, for another y I will be along this yellow line, okay? But for every y that you pick, any fixed y that you pick, you will be along this line, and along that line you will have this density function, which is not dependent upon x, because this is the density function of x. Okay, this is conditional, but this is the density function of x, and it is constant with respect to x. That is why this is uniform. It is uniform. For a given y, this is uniform. For another y, this would be another uniform. ठीक है, यूनिफॉर्म कोई एक तरह का तो नहीं होता। यूनिफॉर्म जो है वो ऐसा भी हो सकता है 3 से 4 तक यूनिफॉर्म हो, ऐसा भी हो सकता है कि 100 से 200 तक यूनिफॉर्म हो। फॉर अ गिवन y, you will have a uniform. For another y, for another given y, you will have a different uniform, but you will still have a uniform. Okay, does that make sense? सर एक छोटी सी चीज बस पूछनी थी, ये लिमिट्स आप दोबारा समझा दें, ये लिमिट्स कहाँ से आई थी -r और जो x और y की? x और y की लिमिट ऐसे आई थी कि यार ये देखें, ये एक सर्कुलर रीजन है जिसके अंदर है, सो रेडियस उसका r है, तो x आपका जो है वो -r से छोटा नहीं हो सकता, +r से बड़ा नहीं हो सकता, एंड सेम थिंग फॉर y। उसके बाहर जो है वो डेंसिटी फंक्शन ही 0 है। ठीक है, तो यही सेम कंडीशन उसके लिए भी होल्ड करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए भी? कंडीशनल के लिए भी होल्ड करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली। कभी ये नहीं हो सकता कंडीशन करने से, y पे कंडीशन करने से ये नहीं हो सकता कि मैं कोई x के एडिशनल वैल्यूज जो है वो क्रिएट कर दूंगा। जी जी जी, ठीक है ना, x जो अपनी वैल्यूज ले सकता है सिर्फ वही ले सकता है। इफ आई कंडीशन ऑन y, x उन्हीं वैल्यू सेट के अंदर से कुछ लेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी चेंज हो सकती है, लेकिन लेगा उन्हीं वैल्यू सेट के अंदर से। हो सकता है किसी के लिए 0 भी हो जाए। ठीक है सर, ठीक है, समझ आ गई। ओके, नाउ सो नाउ सो डी पार्ट इसका देखिए। उन्होंने कहा कि एक रैंडम पॉइंट यहाँ पे पिक करें, एक रैंडम पॉइंट इस सर्कल में पिक कर लें कोई, और उस रैंडम पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को आप कहते हैं डी है। और ये रैंडम पॉइंट जो था ऑब्वियसली ये x, y था, ठीक है। सो डी इज द डिस्टेंस टू दैट पॉइंट, x² + y², d is x² + y², ठीक है। नाउ the question is, what is the PDF of D? PDF of D, this is the question. So in order to answer that question, standard procedure, probability, and the standard procedure is FD of A would be equal to FD of D भी कर सकते हैं, कोई भी आप पैरामीटर वहां पे पिक कर लें, D is less than equal to A, right? This is equal to the probability x² + y² square root is less than equal to A. This is equal to the probability x² + y² is less than equal to A². This is equal to the integral over xy such that x² + y² is less than equal to A² of the density function, which is 1/πr² dx dy. Okay, this is equal to 1/πr² as constant comes out,
and whatever is remaining is really the area of the circle जो x square plus y square is less than equal to a square. X square plus y square is less than equal to a square होगा. A circle like this, ठीक है, a circle like this जिसका ये radius a होगा, so this would be equal to pi into a square. So this would turn out to be a squared over r square. And the guy a can be anywhere between 0 to r. r से उससे बाहर नहीं हो सकता क्योंकि हमने पॉइंट सर्कल के अंदर ही चूज करना है. So this was the CDF. Once you know the CDF, you know the PDF. FD of A would be equal to 2a over r square. Once again 0a r. Okay. इसको इंटीग्रेट करके देखें, आपके पास 0 से r तक इंटीग्रेट करके देखें, 1 आ जाना चाहिए. 1 आ जाएगा आपके पास. E part, expected value of D. Oh, you know the density function. There is no magic in finding the expected value. So expected value of D would be equal to 0 to r a into 2a over r square, x into the density function, x into the density function, d a. So this would be equal to 2 by 3 r square a cube, which would be r cube. So this would be equal to 2 by 3 r. Now, किसी ने नोटिस किया इसको कि ये एक सर्कुलर रीजन था. इस सर्कुलर रीजन के अंदर हमने एक रैंडम पॉइंट पिक किया है. इस सर्कुलर रीजन के अंदर हमने एक रैंडम पॉइंट पिक किया है. And that random point could be anywhere. ठीक है, उसकी expected value जो है, the distance of that point with this, मैं शायद ये expect करूंगा. Sometimes I would expect कि वो इसका radius अगर r है, तो एवरेज वैल्यू और यूनिफॉर्म भी है तो उसकी एवरेज वैल्यू जो है वो r/2 होनी चाहिए. जिस तरह यूनिफॉर्म की होती है कि एवरेज वैल्यू जो होती है दो एक्सट्रीम्स हैं उसके डिवाइडेड बाय 2. बट रिमेंबर, r is not the guy which is uniform. It's the joint PDF which is uniform over this entire region. इस रीजन के ऊपर joint PDF है जो यूनिफॉर्म है आपके पास. So why it is 2 by 3 r, which is higher than r/2. जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी r/2 उससे ज्यादा बड़ी क्यों आ गई है? ज्यादा बड़ी इसलिए आ गई है क्योंकि सर्कुलर के एजेस के ऊपर ज्यादा सर्कमफ्रेंस बड़ी होती जा रही है. वहां पे there is more region there, right? So एक पार्ट और इसका, and then we will finish after I make a comment. What is the median of D? Median क्या होता है? Median वो वैल्यू होती है, the value in fact वैल्यू के बजाय the argument of CDF for which CDF is equal to 1/2, 0.5. So 50% इधर, 50% उधर. So ये इसको मीडियन कहते हैं. So देखें कि मीडियन इसका क्या होगा. So F dot should be equal to 1/2. हमने ऊपर देखा कि इसका जो मीडियन कैसे निकालेंगे, ये a square over r square. So FD of A was equal to a square over r square. Let's put it to be equal to 1/2, okay? Which means कि A is equal to r over square root 2. This is the median. ये वो मीडियन है जहां पे CDF जो है, the probability कि x is less than equal to this guy will be equal to 1/2. ये इसका मीडियन है. And you realize कि ये जो मीडियन है, how does this compare with
r/2, ये भी r/2 से बड़ा है और होना भी चाहिए, और होना भी चाहिए. Okay, so next time we are going to talk about the independence of random variables, when two random variables are independent of each other, and we will also talk about the sums of the independent random variables. I have some written notes that I will upload today, and we will have a homework also uploaded today. वो हम upload कर देंगे. You should be able to solve part of that homework, और बाकी जो उसके questions हैं, you should be able to solve those after Thursday's class. If there are any questions about the material covered today, in fact, ये वो example है जो हमने last time start की थी towards the end of the class, and we are still at the same point. So today's class is mostly clarifying some more concepts and adding more examples rather than introducing new material. कोई नया material इतना ज़्यादा इसमें आया नहीं, but I think it is important to understand कि joint density function, what does that mean, joint PDF का क्या मतलब होता है, ये जो third dimension वाली बात हुई, to understand that calculating the probabilities from the joint distribution by identifying the appropriate region जिसके ऊपर आपने integration करनी है. So that is very important. We have done some examples. There will be more examples in the homework, which will give you sufficient practice to master the material. Okay. If there is any question, I will be happy to answer. We'll stay back here, and अगर कोई नई questions हैं, तो I will close the session. कोई question? No. Last chance to ask the questions. I'm going to stop the share now. Okay, we'll upload the video as soon as it is ready, and I will see you on Thursday. Khuda Hafiz.